Hello everyone, I'm Sonali Pawar. This is our fourth lecture of Advanced Java Programming Unit 1, that is Applet. In last lecture, we have seen get parameter, get code base, get document base, how we can access the directories for the different two directories, that is code base directory and document base directory. We have seen accessing that particular directory, and after that we have seen different types of applets. Two types of applet, simple applet and japlet, that is Java applet. We have had seen different Japlet, means whatever the terms related to the Japlet we have seen, how that Japlet is actually we can access that also we have seen. After that we have seen J label, whatever the label we have to give to the Japlet, that also seen in the last lecture, and how the program for creating the label to the Japlet we have seen in the last lecture. In this lecture we will see text fields. Now we will see what is actually the text fields in the Japlet. A text field allows for input or display of a single line of a text. मतलब जो कोई Japlet होता है, in that text field allows the input or display of a single line. There is another text oriented component, text area, which provides support for multiple lines or text. If we want to provide only one line, then we use text fields. If we want multiple lines, then text area is also used. There is also a label component which merely displays its text. Okay, label, as we have seen in the last lecture, label जैसे देखा था, here there is also a label component which only displays the label for that particular text. Label is used as its name implies to label other components. कोई भी components, whatever components we are using in that, you could think of it as the equivalent of prompt in a console application. There is no text box, the label appears to be displayed on the surface of the applet. जो applet है वहाँ पे text box हम use नहीं कर सकते in that particular prompt in a console application जो है उसमें we cannot use that text box, so that we can use the label there. Label can appear as a which can appear on that particular applet. The label component is purely for display purpose. It is only for the purpose of displaying some of the information or one line or one label, only one label, one word. There are several constructors for text fields. A default constructor that creates an initially empty text field, जो डिफॉल्ट है empty text field create कर देता है, because by default the setting is done like that. A constructor that allows the specification of an initial value, whatever the initial we want to give to that particular applet, that are also given in one type of constructor. One more type of constructor, a constructor that allows the specification of the number of columns for the field. जो कोई text field हम use कर रहे हैं, in that we can use a table also. Number of columns it also allows to specify. That is nothing but the text field. Means text field is a basic text control that enables the user to type a small of the text, small data or small text. It is a text control which enables user to write the text or small amount of text. When the user indicates that text entry is complete, user will write some of the text and he will press the enter. It will be indicating that text entry is complete हो जाएगी text entry, because जब कोई हमारी line लिखना complete होता है in the word, we press enter so that it will go to the next slide. But here in the text field, whenever the user will press the enter, it will indicate that text entry is complete. The text field fires an action event. ओके उसके बाद क्या होता है, एक्शन इवेंट होता है. इफ यू नीड टू ऑब्टेन मोर देन वन लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर, you can use text area. As we have seen above, there is another text oriented component, that is text area. If you want to add number of lines, अगर उसमें सिर्फ एक लाइन नहीं ऐड करनी है, number of lines if you want to add, then we can use text area there. Now getting the concept of text field, how that text field is used, why it is used. We are using text field simply for adding one line or for adding different lines, number of lines, sorry. We are using text area. वहाँ पे हम label भी use कर सकते हैं. Label is also used here for giving the label to that particular, for displaying that label on the screen. Now
how to use this text field. Although there are ways of listening to a text field's events, we will simply get and set its contains in response to other event. Text field can generate events such as with the contents of the text field changes, the method get text and set text of the text field class retrieve store the value of the text field. Means what, we can generate a number of events in that text field. क्या बताया, when the contents of the text field changes, whenever we have written the text field and contents of that text field changes, whatever it will do, it will save the contents of that particular text field जो पहले हमने text field में enter किए थे, whatever the data or whatever the line we have entered in that particular text field, that will be saved. The method get text and set text of the text field classes retrieve or store the value of the text field. मतलब क्या, गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट फील्ड जो है, जैसे हमने गेट पैरामीटर सेट एंड गेट डॉक्यूमेंट बेस वगैरह देखा था, लाइक दैट बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट इट कैन स्टोर और रिट्राइव द डेटा ऑफ द initial text field, that is nothing but the event in that particular text field. The contents of the text field is viewed as a string because we have written as a line. Line is nothing but a string. A combination of words means the content of text field is viewed as a string. Non-string values such as integer, sometimes we can write the integers also, होते हैं integers, must be converted to or from string when storing or retrieving the contents of fields. जब भी हम इंटीजर्स लिखते हैं और वी आर गेटिंग द इंटीजर्स स्टोर करते हैं या रिट्राइव करते हैं, एवरी टाइम दैट स्ट्रिंग वी हैव टू कन्वर्ट इनटू integer, as we have seen before ki if you want to write the integer, then we can get the string field and after that we can convert that string field into the integer field. Just like that here also, if you want to enter or if you want to get the that integer field, then we will get a string field and we will convert that into the integer field whenever needed. This is nothing but the how we use the text fields. Okay, getting the text field now. I'll go to the next point. Applet's behavior, how the applet will behave with respect to that text field whenever we are entering that text field or entering some data into that text field. The init method, that is initialization method, we have seen life cycle of the applet, उसमें हमने देखा था the first step is initialization method where we initialize different components or we define different components. The init method, two text field boxes and associated labels are created with initial वैल्यूज. एसोसिएटेड लेबल्स, क्योंकि हम टेक्स्ट फील्ड वहाँ पे देंगे तो उसको लेबल भी चाहिए, समथिंग लेबल शुड हैव टू बी गिवन टू दैट टेक्स्ट फील्ड दैट विल appear at the initial with the initial values. The second text field is made read only via the set editable method. We can set there so that the second text field will be set as a read only. We cannot write anything in the second. Although this prevents the user from modifying the text field, the programmer can do so. The set text method, a button is created and wired up. Okay, the components are laid out, whatever the components present in that can be laid out or we can create a button. The action performed method, the contents of the two text fields are exchanged. These are the different things that can be done by the particular programmer. जैसे ऊपर बताया है कि it prevents the user from modifying the text, the programmer can do in the set text method. अगर हमने second जो text field है, if we put it as only read only, we cannot write anything in that, but the programmer, whoever is creating that applet or whoever is giving text field in that applet, he can do different changes in that. तो changes क्या होते हैं, he can create a button can be created and wired up, he can create a button there, the components are laid out, he can lay out the components from that particular text field. The action performed method is done. The contents of the two text field are exchange हो सकते because the particular programmer can do the changes, he can do changes because he is the person who have created that particular applet. He can interchange the information of the two text field. Notice that the fact that text field 2 is not editable does not prevent the applet from modifying the कंटेंट्स. मतलब क्या, अगर हम दूसरे जो टेक्स्ट फील्ड है उसको नॉन एडिटेबल करेंगे देन आल्सो दैट एप्लेट कैन बी चेंज और द कंटेंट्स ऑफ नॉट एक्चुअली द एप्लेट, कंटेंट्स ऑफ एप्लेट कैन बी चेंज
that can be modified by that particular programmer. This is the behavior of the applet with respect to text field. मतलब text field जब create होंगे, what can be the behavior of the applet that we have seen now. Now the next point is input type button. How that button can be created in that particular text field. अभी text field हमने देखे हैं, we can write a line how the button is created in the text field. Okay, input elements of the type button are rendered as simple push buttons, जैसे हम push buttons use करते हैं, which can be programmed to control custom functionality anywhere on a web page as required when assign an event handler function typically for click event. जैसे हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड, कुछ भी डेटा डाउनलोड करना है तो वहाँ पे होता है क्लिक टू डाउनलोड, क्लिक टू व्यू पीडीएफ, क्लिक टू व्यू इमेज, क्लिक टू डाउनलोड, ऐसे हम देखते हैं. ओके, क्लिक टू सब्सक्राइब, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ना, क्लिक टू सब्सक्राइब, दैट आर नथिंग बट द डिफरेंट बटन्स वी आर यूजिंग ऑन द वेबसाइट. कभी सोचा है हाउ दैट बटन्स अपीयर ऑन दैट पर्टिकुलर पेज? सोचा है कभी कि कोई भी हम साइट ओपन करते हैं उस पर वो बटन्स कैसे अपीयर होते हैं? डायरेक्टली कॉपी पेस्ट तो नहीं होते जैसे हमने पहले देखा है, कॉपी पेस्ट करके ऐसे कुछ भी वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती. फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दैट बटन्स ऑन द पेज सम प्रोग्रामिंग इज नीडेड. हियर इनपुट टाइप बटन इज गिवन फॉर क्रिएटिंग दैट button. Now we'll see how that is given in the HTML. In the first window, see input class is equal to favorite styled, type is equal to button, means we want to create a button, that's why type is given as button, and its value is add to favorite. Every time you have seen value क्या होती है कि वहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, that is nothing but the value whatever we want to print on that particular button or particular applet, that was given as a वैल्यू क्या दिए, ऐड टू फेवरेट्स. यू कैन सी इन द सेकेंड विंडो ये जो आउटपुट है, फर्स्ट जो है इनपुट प्रोग्राम जो क्रिएट किया था, बटन क्रिएट करना था, ऐड टू फेवरेट्स. ये देख के आपको आइडिया क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज एक्चुअली बटन्स की कंसेप्ट क्या है. कोई भी साइट हम यूज करते एक्सेस करते तो उस पर ये डिफरेंट बटन्स प्रेजेंट होते हैं, डाउनलोड के, ऐड टू फेवरेट, जैसे यहाँ पे देखा है. लाइक दैट button is how that button is created. This is how in the HTML language we are creating the buttons. Then an input type is equal to button element value attribute contains a DOM string that is used as a button label. We will see input type is equal to button, its value is क्लिक मी भी होता है, क्लिक हियर, क्लिक टू डाउनलोड, क्लिक करके भी लिखा होता है बहुत जगह पे, नेक्स्ट करके. अब गूगल सर्च करोगे, कोई भी पॉइंट डाल दो गूगल पे, कोई भी जो कुछ भी आपको सर्च करना है, एट द एंड ऑफ द पेज यू कैन सी गूगल, और उसके नीचे 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट एक एरो आता है, उसके नीचे होता है नेक्स्ट. वहाँ पे क्लिक करेंगे, इट विल गो टू द next. That arrow is nothing but a button they have created for going to the next page. That is nothing but a button. Numbers 1 2 3 4 5, that are also nothing but the buttons ही होते हैं ना. If we click on the 1 it will go to the page number 1, if we click on the 2 3 4 it will go to the corresponding page. That is nothing but the buttons present on that particular Google's page or that particular site. This is the input type, this is the syntax how we give the button. इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, इट्स वैल्यू इज क्लिक मी. आउटपुट में इसको रन करेंगे, व्हाट विल गिव इट, द विंडो एंड क्लिक मी बटन वहाँ पे आ जाएगा. बटन विदाउट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, क्लिक मी. इफ यू वांट टू क्रिएट विदाउट वैल्यू, if you don't specify a value you will get an empty button. input type is equal to button, सिर्फ ऐसे लिखेंगे. see at the end of the that particular page you can see there is a window and उसमें सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स आया है. what is that box? that box is nothing but the button. उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी थी, so that it is writing the empty button. this is nothing but the button is how button is created. okay, is it clear how the concept of, we have seen the concept of button, how that button is created. अभी कभी भी आप कोई भी साइट ओपन करेंगे तो आपके दिमाग में फर्स्ट क्या आएगा, हाउ दैट बटन इज क्रिएटेड ऑन दैट साइट, कि वहाँ पे कुछ भी क्लिक होगा, कुछ भी क्लिक नहीं होगा, डाउनलोड होगा, नेक्स्ट होगा, और वॉट एवर देयर विल बी गिवन एज अ बटन, यू कैन डायरेक्टली गेट द कंसेप्ट हियर. यहाँ पे जो हमने देखा है, यू कैन combine the two concept. वहाँ पे कैसे वो how that particular button can appear on the screen, you can see from here.
Now let's see the next point, that is nothing but the combo boxes. As we have seen, अब ये छोटे छोटे components है, how these components are seen on the screen, that is what we are seeing. जैसे हमने बटन देखा था, पहले हमने क्या देखा था, टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड कैसे आती है कोई भी पेज पे, दैट वी हैव सीन. टेक्स्ट फील्ड का एक एग्जांपल देती हूँ, सर्च का एग्जांपल होता है. गो टू एनी साइट, कोई भी कंसिडर एक कॉलेज की साइट ओपन कर लो, वहाँ पे सर्च का बटन होगा. सर्च में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फील्ड, जो कुछ भी हमें सर्च करना है वो पेज पे वी कैन राइट ओवर देयर, दैट इज नथिंग बट अ टेक्स्ट फील्ड. आता है टेक्स्ट फील्ड, एंटर करेंगे, टेक्स्ट फील्ड विल गिव अ इमीडिएट एक्शन. जैसे हमने पहले देखा था, इट विल फायर द स्क्रीन विल, दैट पर्टिकुलर विंडो विल फायर अप एंड इट विल गिव एन इमीडिएट एक्शन. इमीडिएट एक्शन परफॉर्म होगी और आउटपुट में हमको जो कुछ भी सर्च करना है दैट वी विल गेट, दैट इज नथिंग बट द टेक्स्ट फील्ड. वी हैव सीन buttons, how that buttons appear just now we have seen, that is for click, download or different purposes. Now we will see combo boxes. अभी कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें डिफरेंट कॉम्बो बॉक्सेस आते हैं. देखो वी विल सी इन डिटेल हाउ द कॉम्बो बॉक्सेस appears. A combo box is a commonly used graphical user interface widget और कंट्रोल. कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या, वी कैन सी दैट पर्टिकुलर ऑन द screen. Graphically we can see on the screen. Traditionally it is combination of drop down list or list box and a single line editable text box which allows the user to either type a value directly or select a value from the list. ओके अगर आप कोई भी अगर सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, आप फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, वाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म देयर माइट बी अ बॉक्स वेयर अपीयर्स द क्लास. आपको जो कोई क्लास है उसको क्लिक करना होता है. इफ योर क्लास इज थर्ड ईयर देन वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आइदर FE SE T और B, ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. उसमें से आप कौन सा क्लिक करते हैं, T. That different options are nothing but the combo boxes options. That particular box is nothing but a combo box और उसके नीचे जो कोई options होंगे ये options होंगे. तो क्या दिया है यहाँ पे, traditionally it is a combination of drop down list. drop down list मतलब क्या, उसमें blank जगह आती है select one करके और उसके right side में एक arrow आता है जो downwards दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है. इफ यू क्लिक ऑन द एरो इट विल गो डाउनवर्ड और उसमें जो कोई ऑप्शंस प्रेजेंट है वो पूरे ऑप्शंस आपको दिखते हैं, all that options, so that it is called as drop down list. Whenever you click on that arrow you can see that particular list on that after clicking the button. allowing list or the list box और list box भी होता है और a single line editable text box. और कई जगह पे क्या होता है, उसके नीचे ऑर्डर भी होता है जो आपको लिस्ट में, इफ द वट एवर यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट लिस्ट देन यू कैन क्लिक ऑन द ऑर्डर एंड यू कैन डायरेक्टली राइट देयर. वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा जो कोई ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं. इफ दैट ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट ड्रॉप डाउन लिस्ट देन यू कैन डायरेक्टली एडिट देयर. दैट एडिट बॉक्स भी होता है इनिशियली, यू कैन राइट देयर, which is allows to user to either type a value directly or select a value from the list. Either you can select a value from list or you can type whatever you want to type. The term combo box is sometimes used to mean drop down list. We are using for drop down list. In both Java and .NET, combo box is not a synonym for drop down list. दोनों में similarly हम use कर सकते हैं क्या, नहीं, there are differently we are using that combo box in Java and .NET. Definition of drop-down list is sometimes clarified with the terms such as non-editable combo boxes or sometimes something similar to distinguish to from the combo box. Non-editable or editable. Non-editable में क्या होता है, it is mandatory to select any one options from that. और editable में क्या होता है, options उसमें present नहीं है, then we can select another option. This is nothing but we can select non-editable combo box or editable combo box. Okay, getting what is actually the combo box. Now we will see how that combo box is. See on the screen, this is a example of combo box. Something else, list item 1, list item 2, list item 3, list item 4. Here there is a arrow that is denoting toward the downward sign, so that whenever we click on that arrow it will go, drop down list will come, list item 1. Consider example, आप कोई भी online form भर रहे, if you are filling the online form of exam form, then you have to select the year, then you are
appearing for. List 1, it will be having FE. List item 2 will be having SE, T and B, except than that if someone is having a third year, some student is of third year but he is filling the backlog, third year backlog, so that something else, यहाँ पे something else लिखा है means what, you can write there whatever you want to write. आप खुद से लिख सकते हो जो कोई ये नीचे वाले लिस्ट में नहीं है, that's why that particular window is given. This is nothing but the combo box. अभी समझ में आया how that combo box is on that site. कोई भी फॉर्म भरते हो उस पर combo box कैसे आता है. This is how the combo box is present. Now we will see how to use a combo boxes. ये combo boxes different types के होते हैं. हर जगह पे same combo boxes होते हैं क्या? नहीं. combo boxes में क्या होता है, different entries are there. एक combo यहाँ पे सिर्फ 4 entries दिए थे, कई जगह पे अलग entries रहते हैं, different names for different entries. और हम देखते हैं how that combo boxes we use. J combo box, J is used for Japlet or Java Japlet combo box, which lets the user choose one of the several choices, can have two very different forms. इसमें 2 forms होते हैं. One is the default form is an uneditable combo box, जिसमें हम change नहीं कर सकते. We can select only the options that we are having. We can only select that options. उसमें उसके अलावा कोई और option होता ही नहीं है. That is how uneditable combo box, which features a button and a drop down list of values. The second form is called as the editable combo box, which features a text field with a small button adjusting it. The user can type a value in the text field or click the button to display a drop down list. Okay, he can click, जैसे यहाँ पे arrow दिखाया है, second में arrow दिखाया है, he can click on that drop down list and he can change. जैसे we will see that here's what the 2 forms look like. First form, uneditable combo box. इसमें क्या दिया है, pig, bird, cat, dog, rabbit. You can select any one of that. इसमें कुछ changes नहीं करते. Second में क्या है, editable combo box. You can do different changes. First क्या है, dd mmm if you want to write something date for something purpose, or simply consider if you want to write the birth date, dd mmm dd mmm next to that different types they are given. Below that you can see different types. You can select any type of that and then you can write the whatever you want to write in that combo box. That is how you use the combo box. Getting the concept of combo box? Now we will go to the next concept, that is check boxes. A check box, tick box or tick box is a graphical widget that permits the user to make a binary choice. That is choice between one of 2 possible mutually exclusive options. Why binary? Because there are 2 options. You can select any one option between the 2. That is choice between the 2 possible mutually exclusive options. For example, the user may have to answer yes, that is checked, or no, not checked on a सिंपल एस और नो क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चंस हमें वहाँ पे दिखते हैं, सर्वे होता है, यू कैन सी ऑन अ साइट, कोई भी साइट है वहाँ पे सर्वे होता है जिसपे सम ऑफ द क्वेश्चन दे अस. जैसे कोई भी वीडियो कॉल आप करते हैं तो एट द एंडिंग ऑफ द वीडियो कॉल वहाँ पे भी आता है रेट करके कि इज इट यूजफुल और नॉट, इफ यस देन क्लिक यस, इफ नो देन क्लिक नो, ऐसे आता है. इज इट यूजफुल फॉर यू, लाइक दैट. चेक बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर गिविंग, इट इज गिविंग बाइनरी ऑप्शंस. 2 ऑप्शंस देते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन एनी वन ऑप्शन. जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड डॉक्यूमेंट, यू हैव टू क्लिक इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड डॉक्यूमेंट्स. दिस इज नथिंग बट द चेक बॉक्स. नाउ the next concept is tab panes. We will see what is tab panes. JTab pane class is used to switch between a group of components by clicking on a tab with a given title or icon. It inherits the J component class. Means what? There is a group of components, different components are there. You can
click on any one of the component 1, component 2, 3, 4, ऐसे different components are given there, and you can click on that particular component whichever is needed to you, or on a tab that was given title or icon, that is nothing but a tabbed panes. JTab panes classes declaration, how the JTab pane class we declare, that is given. Let's see the declaration for java x.swing.jtabbed pane class dot public class JTab pane extends J components, implements serialized accessible swing constants. To create a tab pane, how we can create a tab pane, we will see how tab pane is, how you can see the tab pane, that also we will see how to create that particular tab pane. We will see to create a tab pane. Firstly, we have to initiate JTab pane, create the components you wish to display. Whatever the component, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, ऐसे different components होते हैं, तो whatever you want to select the components, you can select from there, and then add the components to the tab pane using the add tab pane method. Now we will see what is actually the tab pane. ये window देखने के बाद you will get the idea about the what is tabbed pane. The following picture introduces an application called tab pane demo that has a tab pane with 4 tabs. अभी यहाँ पे tab pane है, क्या क्या टैब, ये टैब पेन में क्या क्या है, टैब 1, टैब 2, टैब 3 एंड टैब 4. देयर आर डिफरेंट टैब्स. जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल शीट, कंसिडर एन एक्सेल शीट वी आर हैविंग, वी कैन हैव डिफरेंट एक्सेल शीट, उसमें ऐड कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन द डिफरेंट एक्सेल शीट. तो वो नीचे एक्सेल शीट के नीचे आता है, देखो बिलो दैट वट एवर द एक्सेल शीट वी आर सीइंग, बिलो दैट वहाँ पे जितने एक्सेल शीट हम ऐड करेंगे वी कैन सी दैट डिफरेंट एक्सेल शीट. ओके, तो वो जिस पे क्लिक किया वो एक्सेल शीट ओपन होती है, उसके बाद जिस पे लाइक दैट डिफरेंट वी कैन यूज इट फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट ऑल्सो. तो यहाँ पे जो टैब पेन है, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टैब्स. वी कैन क्लिक ऑन एनी टैब दैट वी want and we can get the contents of that tab. Now tab placement, how that tabs are placed. The default tab placement is set to the top location as shown above. जैसे ये example में दिखाया है, by default it is shown at the top of that particular window. You can change the tab placement to left, right, top, bottom by using set tab placement method. You can align that to the left side, right side, top side, bottom side by using the set tab placement button or that particular method. That is nothing but the tab placements. Okay, getting the concept of tab. कैसे होता है tab? There are different tabs or different options or different components we can use from that particular window. Whenever you click on that particular one tab, that screen will appear, and then whenever click on another, second will appear. We can, by default उसका जो जगह होती है that is at the top of that particular page or particular window. We can change it by the set tab placement method. Now we will see Java tab pane examples. First we will see import java.swing public class tab pane example. We will see this program, how the tab pane is created by this programming. We will see public class tab pane example, jframe tabbed pane example. f is equal to new jframe. jframe हमें न्यू लेनी है जिसमें हम ये टैब पेन क्रिएट करेंगे. j टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया किस लिए? टेक्स्ट फील्ड्स में देखा था, टेक्स्ट एरिया देखा था हमने. We can add different lines. For that purpose we were using text area. ta is equal to new j text area 200 whose width is equal to 200 and height is equal to 200. Whatever the data we want to write in that particular j text area, its width can be 200 and height can be 200. j panel p1 is equal to new j panel p1 add ta. In the p1 we are adding ta means new j panel में हम क्या ऐड करेंगे? new text area. panel में मतलब that window for that particular tab. In that we are adding text area. We are adding different text areas, so that here we have written add ta to the p1. j panel p2 is equal to new j panel. अभी p2 next tab हमको create करना है, next tab pane हमको create करना है. Then we will write new jpen p3 new jpen
न्यू क्रिएट करते जाएंगे. जे टैप्ड पेन TP इज इक्वल टू न्यू जे टैप पेन TP set bounds 50 50 200 200. Set bounds, we are setting the boundaries of that particular tap pen, means we are giving the measurements to that particular whatever tap pen will appear on the screen, usko hum measurements de rahe hain, that is 50 50 200 200. It will appear as a sorry not horizontal, it will appear as a rectangular screen. Rectangle जो होता है वो appear होगा उस पे, because the front sides are similar 50 50 200 200. TP add main P1, then TP add visit P2, it will go to the P2, then TP add help P3, means we have written main for first, then visit for second tap pin, and then help for third tap pin, help P3. F add TP, F set size 400 400, F set layout is equal to null, F set visible, that is true, public static void main string args new tab pane example. We are seeing the new tab pane example. After the execution of this program, we will see a window that is having three tab panes, or the one tab pane that is having three components. First is main component, second is visit component, and third is help component. This is how we are creating the tab pane in that particular Japlet. Okay, getting the concept of tab panes. Now we'll see how we can switch to the specific tabs. There are different tabs now. How we will switch to that tab? There are three ways to switch to the specific tabs using GUI. Using a mouse, directly using a mouse, we can click on the first tab, second tab, and third tab. To switch to a specific tab, the user will click at the tab with the mouse. Second, using a keyboard arrows. Keyboard में arrows होते हैं left, right, up and down. Using that arrows also we can move to different tabs. When the J tab pane objects has the focus, then the keyboard arrows can be used to switch from one tab to another tab. And for the third method, how we can change or we can switch to the different tabs is by using mnemonics. The set mnemonics at method allows us or the user to switch to a specific tab using the keyboard. For example, set mnemonics at 3 key event vk underscore 4 makes 4 the mnemonic for the fourth tab, which is at index 3, since it indicates that index starts with 0. Pressing alt 4 makes the fourth tab component appear. Often a mnemonic user a character in the tab's title that is then automatically underline whatever we have pressed on that particular keyboard. To switch to a specific tag, programmatically use the set selected index or set selected component method for switching the for switching to different tabs. We can use these two methods. Now see prefer sizes in tab. How we can give different sizes to the different tabs. We can have rectangle, bigger size and smaller size. How that sizes we can give in the particular tabs is, when building components to add to a tab pane, keep in mind that no matter which child of the tab pane is visible, each child gets the same amount of space in which the display itself. मतलब whenever we are clicking on a one particular tab और नीचे जो कोई भी tab दिखता है with by we does not consider that particular tab, whichever is open, we can directly see the space given to the each and every tab. Or here they are saying to the child of that tab pane, means जो कोई tab pane में हम different tabs use कर रहे हैं, हर एक को size similar होगा. The preferred size of the tab pane is just big enough to display its tallest child at its preferred height and its widest child at its preferred width. मतलब क्या प्रेफर्ड साइज उसको हम क्या देते हैं कि उसमें जो टॉलेस्ट चाइल्ड, मतलब वट एवर द डेटा, वट एवर द लाइन और वट एवर द लेबल वी आर राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर टैब पेन, फॉर गेटिंग द टॉलेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका साइज है वी कैन सी दैट, and widest also we can say that whatever the size of the tallest
that will be the height for that particular preferred height, and whatever the size of widest, then that will be the width of that particular tab. Both in combination we will see the preferred साइज, जो टॉलेस्ट है और जो जिसकी ज़्यादा, जो वाइडेस्ट है जिसकी विड्थ ज़्यादा है, बोथ विल बी कंबाइंड एंड दैट विल बी साइज गिवन फॉर प्रेफर्ड साइज. सिमिलरली the minimum size of the tab pen depends on the biggest minimum width and height of all its children. In the tab pen demo example, the fourth panel has a preferred width and height that are larger than those of the other panels. Thus, the preferred size of the tab pen is just big enough to display the fourth panel at its preferred size. बिकॉज टैप पेन में क्या, डेमो एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, फोर्थ पैनल हैज प्रेफर विथ एंड हाइट दैट इज लार्जर दैन द अदर पेन्स. जो बाकी के जो टैब्स है इट इज हैविंग मोर साइज देन दैट, सो दैट द प्रेफर साइज क्या होगी, जो सबसे टॉलेस्ट है, जो सबसे वाइडेस्ट है, उसकी साइज जो है दैट विल बी द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेफर्ड साइज, सो दैट द प्रेफर साइज ऑफ द टैप पेन इज जस्ट बिग इनफ टू डिस्प्ले द फोर्थ पैनल एट इट्स प्रेफर्ड size, that is preferred height and preferred width. Every panel gets exactly the same amount of space, that is 410 pixels wide and 50 high, assuming that the tab pen is at its preferred size. Getting it? Getting the concept how preferred size in tab pens, मतलब preferred size में जो भी component, जो कोई भी pens present रहेंगे, वो tabs present रहेंगे, in that whichever is the tallest and whichever is the widest, that will be the preferred size. उसकी जो कोई साइज होगी, जो सबसे बड़ा चाइल्ड होगा, जो सबसे बड़ा टैब उसमें प्रेजेंट होगा, the size of that particular will be given as the size for that preferred size in that tab. Tabs with custom components. Now we will see different tabs with custom components. The tab component demo example introduces the tab pane whose tabs contain real components. Such the use of the custom components brings new features such as buttons, combo boxes, labels and other components to tabs and allows more complex user interaction. Here is the tab pane which is having close button on its tabs itself. पहले हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्लोज बटन था क्या, जो कोई टैब हम एपलेट को था, वट एवर द विंडो वी आर सीइंग वी हैव सीन द क्लोज बटन टू दैट, बट जो कोई टैब हम उसमें कंबाइन करेंगे, एम्बेड कर रहे हैं, उसमें डिजाइन कर रहे हैं, उसको क्लोज बटन नहीं था. हाउ वी कैन हैव द डिफरेंट कस्टम कंपोनेंट्स, तो इसमें क्लोज कंपोनेंट जो है वो हमने ऐड किया. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज टैब 0. After that there is x is nothing but for closing that particular tab 1, then x for closing the tab 2, tab 3, tab 4. Every tab is having a custom button for closing that particular tab. This is how we can add the custom buttons or custom components to that tab. Now we will see how we will remove the tabs, how the tabs can be removed. The following code from button tab component.java removes a tab from the tabbed pane. Note that event handling code is necessary since each tab contains a real JButton object. You must attach an action listener to the close button. As the user clicks the button, the action performed method determines the index of the tab it belongs to, removes the corresponding tab. Okay, now we will see the particular code for closing that tab or removing that tab. Public void action performed action event init चाहिए यहाँ पे is equal to pane dot index of tab component button tab component dot this. If I is not equal to -1, then pane will be removed and I in the bracket. This is we are using for removing the tab. How we can give the titles to the customized tab. अभी टैब हमने कस्टमाइज किए, उसमें क्लोज बटन भी कस्टमाइज किए, उसको हम टाइटल्स कैसे देंगे. तो कोड बिलो that is taken from the button tab component.java shows how a customized tab component gets a title from an original tab pane. ओके उसमें कैसे टाइटल देते हैं. जे लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल टाइटल इन ब्रैकेट टाइटल. पब्लिक स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट
init is equal to pen dot index of tab component button tab component dot this. If I is not equal to -1, return pen dot get title at I, return null. Okay, getting how we can give the title to that particular tab. ये program में हम देखा है new j label title, whatever the title we want to give to that particular component or tab, we are giving by using this program. Here this lecture ends. Next point we will see in next lecture. Thank you.